नरेंद्र जी, राजनाथ जी और अमित जी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के भूभाग हैं। सारे ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाण यही कहते हैं। यदि आपको लगता है कि वो भारत की है तो उसके लिए नेपाल सरकार ने आपसे कूटनीतिक वार्ता के लिए अनुरोध भी किया था, लेकिन वो अनुरोध को नजरअंदाज करके एक तरफी हिसाब से नेपाली भूमि में जो सड़क बनाए हो ना आप, वो नेपाली जनता को कीमार्थ स्वीकार नहीं है। इस कारण कृपया आप जो सड़क बनाए हो उसे स्थगित कीजिए और कूटनीतिक हिसाब से वार्ता के लिए आप आ जाइए। कोरोना के चलते हुए वीडियो वार्ता भी चलेगी। देश की धरा मां होती है, चाहे जिसकी भी हो। आपने हमारी मां को काटी है और आप भागवत गीता कर्म में विश्वास करते हो, तो ये भी मान लो कि आपकी मां की भी कटेगी और जरूर कटेगी, और आपके रहते हुए आप देख भी पाओगे। इसमें हमें पूरा यकीन है, क्योंकि हम भागवत गीता में विश्वास करते हैं। हम आशा करते हैं आप बहुत जल्द वार्ता के लिए आएंगे, नहीं तो ऐतिहासिक हिसाब से नेपाली और भारतीय जनता के बीच में जो एक सुमधुर संबंध चल रही है, वो कुछ महज वर्ग किलोमीटर जमीन के लिए आप खो दोगे, और जब आप ये खोगे तो आप और हमारे लिए भी नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के लिए पूरा दुर्भाग्यपूर्ण विषय बनेगा। कृपया भगवान श्री पशुपतिनाथ के जो लोग हैं, जो आपसी सम्मान, भाईचारा और सहृदयता में विश्वास करते हैं, उनकी धीरज को आप कमजोरी मत समझिए। ये अपनी औकात में आ गए ना तो फिर आपकी देश और आपकी जनता की भी शांति नहीं रह पाएगी। नेपाली लोगों को तो जानते हो आप, इतिहास गवाह है, ये भूखे मर जाएंगे, ये मूर्ख भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपनी एक इंच धरा भी किसी गैर को लूटने नहीं देंगे। हमें आशा है जो सड़क बनाई है आपने, वो जल्द ही स्थगित करके कूटनीतिक वित्तीय वार्ता में आ जाएंगे, नहीं तो हर तरह की चुनौती के लिए हम तो तैयार है, आप भी तैयार हो जाओ। भगवान श्री पशुपतिनाथ हम सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव। Dear Xi Jinping and Chinese authorities, hope you are doing well. It is a matter of great surprise for Nepali people to know that we have signed road agreement with India consisting Limpiadhura, Kalapani and Lipulekh, which are Nepali territory. Despite Nepal government's concern letter regarding the same issue, you kept on building and inaugurated the road, neglecting the historical relationship of brotherhood, harmonious relationship of brotherhood between China and Nepal. And it is a very sad event. We know you are interested in doing business with India and its people, but there are better ways to do that. And we could have helped on that as well. Not only we have taken this as damaging to our friendship, but it is a straight attack on our nation and sovereignty. So the agreement you did with India regarding the same is completely unacceptable to Nepali people. Hence, we kindly urge you to stop the road initiative now and come in a tri-party diplomatic conference, and we find a win-win amicable solution for all the concerned parties. Otherwise, please be ready to face the severe consequences on the good relationship that we have enjoyed up until now, and the faith that we have enjoyed up until now, and the friendship that we have enjoyed up until now. Nepali people can defend their motherland themselves. Do it as early as possible, not waiting Corona to go. I hope and believe you take this matter as the most serious issue and address it as earliest. Namaste. आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, रक्षा मन्त्रीज्यू र परराष्ट्र मन्त्रीज्यू,
पहिलो कुरा त 2008बाटै उनीहरूले रोड बनाउने काम सुरु गरेका थिए भने अहिले आएर बल्ल यो कुरा जनतामा थाहा लाग्दैछ भने त्यो बेलादेखि आजसम्मका जति पनि सरकारहरू छन् त्यो सबै सरकारहरूको गल्ती छ यसमा। तर अब यसको गल्ती उसको गल्ती भनेर अहिले घर झगडा गरेर बस्ने बेला होइन। हामी सबै एकजुट भएर एक ढिक्का भएर यो चाहिँ हाम्रो भूमि अतिक्रमण भएको छ यसको प्रतिकार गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजैबाट अहिलेबाट यो मुद्दालाई सरकारी स्तरबाट पनि जनस्तरबाट पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुरु गरिहालौं। सरकारी स्तरबाट कसरी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ करण त्यसको लागि छुट्टै विज्ञहरूको टोली बनाएर हामीले सुरु गरिहालौं काम र जनस्तरबाट पनि कसरी गर्न सकिन्छ सरकारले पनि चाहिँ आइडिया लिएर आओस्। जनस्तरबाट पनि त्यो आइडिया आइरहेको छ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ लिम्पियाधुरामा नेपालको झण्डा फहराउने उद्देश्यले नै सीमामा कम्तीमा उनीहरूको जति सेना छन् त्यति नै सेना बराबरको सेना चाहिँ हामी लिएर गएर बसौं। इमिडिएटली गएर बसिहालौं। त्यसको लागि चाहिँ म जस्ता युवाहरू जो जान चाहन्छन् त्यसलाई पनि साथमा लिएर गएर हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा म जान पाएँ भने म धेरै आफूलाई भाग्यमानी ठान्नेछु। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ नाकाबन्दीको लागि हामी तयार हुनुपर्छ दुवै देशबाट। अब लकडाउनले हामीलाई केही आत्मनिर्भर हुन त सिकाएको छ तर हिजो यस्तै परेको बेलामा चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरू चाहिँ खोले ठाडो खाएर पनि बाँचेका थिए, खाएर पनि चाहिँ आफ्नो देश मातृभूमिको रक्षा गरेका थिए भने अब हामीले पनि त्यो गर्न तयार हुनुपर्छ। हामीले एउटा पुस्ताले यो सेक्रिफाइस गर्नै पर्छ। नगर्यो भने हाम्रो आउने इन्टायर जेनेरेसन इन्टायर पुस्ताले भोलि चाहिँ दुःख पाउनेछ। सधैँ अर्काको चाहिँ गुलाम भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न जरुरी छ। नाकाबन्दीको लागि तयारी गरौं। अर्को कुरा भनेको चाहिँ चौथो नम्बरमा हामीले भारत या चीन कसैसँग पनि डराउनै पर्दैन। आफ्नो माटो आफ्नो स्वाभिमान भन्दा संसारमा प्यारो अर्को केही पनि छैन। पैसा चाहिँ धन सम्पत्ति भनेको भोलि चाहिँ हाम्रो माटो रहे राष्ट्र रहे संसारको एउटा धनी देशहरू मध्ये एउटा देश बन्न सक्छ। यो देश नेपाल पक्का बन्न सक्छ। त्यसको लागि छुट्टै एउटा रोड म्याप नै छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एकपटक देह त्याग गर्नै हो। यो शरीर छोडेरै जानु छ एकपल्ट भने के को डर के को चिन्ता भनेको जितियो राम्रो गरियो भने संसारभरि चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमानको चाहिँ इज्जत लिएर बाँच्न सकिन्छ। मर्यो भने स्वर्गीय आमाको काख छँदैछ नि। हामीले फेरि संसारलाई नेपालीको जात के हो भनेर देखाउने बेला आएको छ। यो अवसर हो। यो अवसरलाई नगुमाऊ नचुकाऊ। हाम्रो देश भनिन्छ नि यतिकै भने हैन, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी। हाम्रो देश यो माटो देवभूमि हो, स्वर्गको भूमि हो। यो सबैको रक्षा गर्नको लागि हामी सबैको उत्तिकै एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अब हामी मिलेर जुटेर यो काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। भगवान श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून्। हर हर महादेव।